Hello class, now in this lecture we will take another example for the modeling of for the solid modeling Pro Engineering software. Okay, I think I am audible to all. If you have any doubt regarding to the tools and the shortkeys, then you can refer my previous videos in which I have already that highlighted that those shortkeys for dragging purpose, for zoom in and zoom out purpose, for tangent also. Okay, so all the tools I have already covered in the sketcher module, because some of you have come across some problem while drawing a tangent to a circle during a previous assignment which I have allotted to you. Okay, so please go through those videos which I have already shared on YouTube on the sketcher model to understand how to use those tangent command. Okay, now in this lecture we will do for the to solid modeling. Okay, this is our object which is now visible on the screen. Okay, so it is very simplest problem which I am uh, try to complete in today's lecture. Okay, it is somewhat not that much simple if we compare a previous problem which I have completed in the previous lecture as compared to this one. Okay, this is difficult, somewhat difficult, because here a straight slab was present, and on that slab a four poles hole was there. Okay, but here you can see two flanges are here. On that flanges holes are normal feature which was also present in case of the previous object. Okay, in addition to that one slot also present on this slab. So एक सेम प्लेन पे मल्टीपल होल्स थे in this object on different plane holes was present. Okay, so comparatively बोल सकते हैं somewhat tricky but not as that difficult it is. Okay, so I will start with this object first of all. Okay, so solid modeling करना है हमें. So to have a solid modeling, we have to select the appropriate file in our Pro Engineering window. Okay, so for that purpose, I am clicking on New. Okay, in that new, what I have to select part. Okay, I have to select a part. Unselect this. Use default template. Say OK. Okay. After that, select MMNS part solid. This unit we have to select. This template we have to select. Okay. Say OK. Once you create OK, once you click on OK, you will able to see this window. Okay, on this window, you have to align your object. ये आपका ऑब्जेक्ट है. फ्रॉम विच साइड यू हैव टू स्टार्ट टू ड्रॉ. ओके, इन केस ऑफ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ओके, हम क्या करते थे, in the problem statement this 3D model was present. Okay, while drawing the orthographic projection, and at one of the point origin was mentioned. Okay, from that point of उस point को हम origin consider करते हैं. We are started to draw a orthographic projection like front view, top view and the side view. Okay, but here no origin is explained. While drawing the solid modeling, there is no specific origin is mentioned in a problem statement. You have to decide yourself. So some people may take origin over here, some people may take origin over here. So you have to align this your object to this plane system. This is the plane, front plane, top plane and the right plane. So आप कहाँ से start करोगे? So I select the front plane, means मैं ऊपर से देख रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को, एंड आई एम ओनली try to draw first of all, try to model first of all base of this object. बेस कौन सा है? जो बेस जिसके ऊपर ये रेस्ट है इंटर थिंग, उसको हम बोलेंगे बेस. और ये जो फ्लेंजेस है, ये दोज आर द एडिशनल फीचर्स. जो स्लॉट है ये एडिशनल फीचर है, ये होल्स है फ्लेंजेस में, दोज आर द एडिशनल फीचर. सो I try to draw a base first. Okay, and I'm looking from top. Okay, so I supposed to select a front plane. Okay, and saying sketch. जैसे मैं sketch बोलता हूँ, at that instant only this plane get aligned or making or get parallel with that window which I am facing right now. Okay, जैसे ही आप किसी प्लेन को सिलेक्ट करते हो और स्केच बटन पे क्लिक करते हो, आई हैव टू अगेन क्लिक ऑन स्केच. ओके, माउस का लेफ्ट बटन में प्रेस कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ मतलब. ओके,
So now this sketch command will start it. In that sketch command, if I want to on that grid view, I can start the display grid view. Okay, ये दूसरे कमांड आपको अगर चाहिए होंगे कि हाईलाइट ओपन एंड्स वगैरह, ये ऑलरेडी यूजर्स हमने देखा है स्केचर मॉड्यूल में. ओके, सो वही यूज है इसका. दिस इज जस्ट फॉर द कन्वीनियंस. कभी कभी गलती से आपका प्लेन ऐसा अलाइन हो जाए और इस प्लेन को फिर से पैरेलल करना. इफ यू वांट टू अगेन पैरेलल इट दैट प्लेन. अब ये मैंने कैसे किया, ये प्लेन को किस तरह से रोटेट किया, स्क्रॉल दबाया है माउस का और स्क्रॉल को रोटेट किया. स्क्रॉल दबा के माउस को ड्रैग कर रहा हूँ. माउस का स्क्रॉल दबाना है मुझे और माउस को ड्रैग करना है इधर उधर जिस हिसाब से आपको चाहिए. बट ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसे घूम रहा है. आपको सिर्फ प्लेन घूमते हुए दिखेंगे बिकॉज अभी ऑब्जेक्ट फिलहाल अवेलेबल नहीं है इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर. सो ओनली प्लेन विल रोटेट. ओके, नाउ जो भी प्लेन रोटेट हुआ है अभी उसको फिर से उसके डिफॉल्ट पोजीशन पे लाना है या फिर से आप नॉर्मल टू द पैरेलल टू द विंडो लाना है. and you just have to click on this sketch orientation button. जैसे sketch orientation you have click it on sketch orientation, this front window जो हमने select किया that get parallel to your viewpoint. okay, क्योंकि by default कभी कभी गलती से माउस का स्क्रॉल क्लिक होके the orientation may changes. okay, so in such a situation if you try to realign the plane to your viewpoint by clicking the scroll button is somewhat difficult. okay, it is quite difficult. okay, and in that way it sometimes it will not align properly or not get parallel to properly to your viewpoints. In that case you just click on the sketch orientation, then everything get parallel to your viewpoint now. okay, so now we'll start with the drawing of our base. okay, drawing of our base of that feature. okay, so this is our base. Right now dimension is not with us, so just we are assuming the dimension. okay, so from just just remember from this point to this point. okay, if I'm considering the dimension is 500 mm. okay, from this point to this point 500 mm. The width of this slab is for example take as a 200 mm. okay, so diameter of this circle also become 200 mm. okay, in that way only we are just assuming the dimension because object whatever I got from the internet is not it was without dimension, so we are just assuming the dimension right now. So from this point to this point I am considering 500. okay, and the width of this thing is 200, so diameter of this circle also become 200. okay, so first of all we'll draw this slab, bottom slab first of all. Now start with this rectangle. okay, so this is a rectangle. Now just give the dimension to it. It's a 200 mm. okay, width as I told you. After that this is 500 mm. okay, now it asking me what is the position of this edge from the origin of the plane. okay, so better to have 0 from this. अगर आप इसको it is up to you, not necessary आपको 0 लेना है. it's up to you how मतलब कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है आपके. ओके, सो इट इज अप टू यू कि आपको क्या लेना है. सो आई एम टेकिंग 0 हियर क्योंकि मुझे सर्कल का सेंटर मिल जाएगा. क्योंकि अगर मैं इसको 0 पे लेता हूँ ना तो मुझे यहाँ सर्कल निकालना है ना. ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 500 mm और यहाँ से लेके यहाँ तक 200 mm का विड्थ है. सो एग्जैक्टली ओरिजिन पे इस पॉइंट पे मुझे सर्कल, ये जो सर्कल निकालना है मुझे हाफ सर्कल, उसका सेंटर मिल जाएंगे, इसलिए मुझे 0 पे ले लिया. किसी को चाहिए इसको 250 पे लो ओरिजिन, वो भी चल सकता है. इट्स अप टू यू, योर कन्वीनियंस. आप किस चीज़ को कन्वीनियंट फील करते हो. ओके, सो नाउ इस विड्थ को सेंटर से एग्जैक्टली इक्विडिस्टेंस रखते हैं. सो 200 विड्थ है तो इसको 100 कर देंगे. सो एग्जैक्टली सेंटर में आ गया हमारा रेक्टेंगल. नाउ यू जस्ट, अभी ये मैंने जूम आउट किया है, ये जूम इन है, जूम आउट है. जूम इन कैसे करते हैं, कंट्रोल बटन दबाना है, स्क्रॉल दबाना है एट द सेम टाइम माउस का, और सिर्फ ऊपर ड्रैग किया तो जूम आउट हो रहा है, नीचे ड्रैग किया तो जूम इन हो रहा है. ओके, सो ये लिख के रखो. आई विल नॉट प्रोवाइड यू दैट लिस्ट ऑफ शॉर्ट कीज. ओके, व्हाइल explaining the object, that time only I will dictate the short keys to you. Just note down it. okay, or if you forward then again review that video. okay, so you will able to again you again come to know कि ये है short keys हमारा. okay,
तो अब ये हो गया हमारा जूम इन जूम आउट के लिए। अगर ड्रैग करना है मुझे इस इमेज को तो शिफ्ट दबाना है और स्क्रॉल दबाना है, शिफ्ट एंड स्क्रॉल, और सिर्फ मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं पैन, पैन कर रहे हैं हम। ओके, सो शिफ्ट प्लस स्क्रॉल, और जहाँ चाहिए वहाँ लेके जाओ। ओके, सो दिस इज द अनदर थिंग which we can do for the panning of the image. Okay, so this is the thing. After that, if you want to now दूसरा फीचर निकालना है हमें, दैट इज वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 200 mm डायमीटर। सो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट हो गया। हमने क्या किया है, हमने ये जो कंस्टेंट है, डिस्प्ले कंस्टेंट ऑन रखा है, सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली इट इज शोइंग मी एम ओवर हियर मिडल पॉइंट ऑफ दिस एज। ओके, एज आई डिसेबल दैट कंस्टेंट, सो इट वोंट शो मी मिडल पॉइंट। ये एम करके मार्क नहीं दिखाएंगे, सिर्फ वो वहाँ जाके फ्रीज हो जाएगा फॉर मोमेंट। और जो क्रॉस दिख रहा है एरो, दैट विल बी फ्रीज एट दैट पॉइंट, बट इट वोंट शो यू कि दैट इज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस एज। जैसे आप कंस्टेंट डिस्प्ले कंस्टेंट ऑन रखते हो, you will it will indicate you am over there. Okay, whenever cursor located at that point only. Okay, so this it means that this is the midpoint. Now you can start from this point, draw a circle. अभी सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने, कमांड से बाहर जा रहे हैं। ओके, नाउ हमें क्या करना है, इसको ट्रिम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम हमारा इमेज देख रहे हैं, सो इट इज द सर्कल इज नॉट कंप्लीट। ये सिर्फ आउटर सर्कल, हमको सेमी सर्कल निकालना, वी हैव टू वांट टू ड्रॉ अ सेमी सर्कल। ओके, सो बट फॉर अ सेक ऑफ टाइम हमने कंप्लीट सर्कल निकाला, सो जो रिमेनिंग सर्कल है दैट वी हैव टू ट्रिम बाय यूजिंग अ this button. Okay, by using this command, okay, we have to trim it. Okay, so just click on it, it get trim over here, और बीच में करना है जो whatever the line in between them, it is also not there, so it is complete one slab. Okay, just imagine करो कि you are just cutting a sheet metal of this shape. Okay, you are cutting a sheet metal of this shape. Okay, so base shape का sheet metal you have cut it. Now another thing, अभी base picture तो हो गया, base picture we have completed. Okay, in addition to that, if you look clearly, one slot also present on that base feature. So at the same time you can draw it, this slot over here, and you can exclude it along with the slot. You can exclude it along with the what we can say, along with the same along with the base. Okay, but if some because of that what will happen, your step will be reduced. अभी वो करके दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ. Okay, so for the फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सक्लूड द बोथ थिंग टुगेदर। जो ये स्लॉट भी है वो भी हम निकालने का ट्राई करेंगे अभी। चलो, तो अभी ये जो स्लॉट है उसका डायमेंशन हम डिसाइड करते क्या होगा। सो उसका डायमेंशन हम डिसाइड करते हैं कि ये जो सर्कल है, ये हाफ सर्कल स्लॉट का, इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस ओरिजिन ओनली। ओके, और इट अबाउट 20 mm width and 20 mm width and some 25 mm लेंथ, ऐसे हम इमेजिन करते हैं। सो 20 mm का हमें सर्कल निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर यहाँ से ही है उसका पहले सर्कल का। सो 20, दूसरा सर्कल भी निकाल लेते हैं हम, सर्कल एंड कर देते हैं। चलो, नाउ so 20, ओके, इट्स टू स्मॉल आई थिंक, जस्ट डबल इट, 40 कर देते हैं इसको, 40। ओके, 40 हो गया। ओके, it's 40 now, and distance between them we will decide 200, let it be, कितना देखो किधर तक जाते हैं, we will check 200, on that basis we will find the dimension 200, it's too far, let's do it 100 only. Okay, sufficient. Okay, now we have to draw a tangent to it. wrong slit हो गया। Sure, this is a, you can draw it entirely, we can trim it after that. Okay, it is better to draw extended, because if the small gap if there in between circle and this line, then it won't extrude. So better to draw a extended line. So after that you can trim it, just trim.
Okay, so it it can trim easily. But if you draw a short line, and if any minute gap is present in between line and the circle, it will difficult to detect कि कहाँ exactly gap है. Okay, so because of that only extrude won't happen. Okay, just because of small gap. So better to have draw extended lines and cut it by delete segment tool. Okay, now this is our base is ready. Now this is our base. Okay, our base is ready. Now you can draw, you can check it. Okay, your our base is ready entirely. All features of this base is completed. Now you can escape out or you can exit from this sketch command. Okay, sketch command से हम बाहर निकलते हैं. Just say done. As soon as you pressing done, this window, this such like structure will appear in front of you. Okay, now हमें क्या करना है, हमें इसे extrude करना है. This is extrude command. Okay, जैसे हम extrude करते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है एक्सट्रूड करने के लिए. ओके, स्केच जो स्केच था हमने उसका सिर्फ सिलेक्ट किया. अभी हमको इसका थिकनेस नहीं पता, हम एज्यूम करते हैं 500 का लेंथ है उसका, 100 करके देखते हैं कितना थिकनेस आता है. कंसिडरेबल थिकनेस होना चाहिए. ये 185 है, ये टू 100. लेट चेक, ये बहुत ज़्यादा है, 100 भी से 50 इट्स सफिशिएंट. ओके, एंड कैसे चाहिए आपको, बोथ साइड चाहिए. सिमेट्री लेते हैं हम. बेटर टू हैव सिमेट्री अबाउट द प्लेन. 25 ऊपर 25 नीचे एंड से ओके. ये हो गया आपका स्लैब बेस रेडी. ओके, अभी मैंने क्या बोला था आपको कि ये जो फीचर है, फॉर सेक ऑफ टाइम मैं प्लेन गायब कर लेता हूँ, जो भी दिख रहा है सब गायब कर लेता हूँ. ओके, मैंने क्या बोला था कि ये जो स्लॉट है निकाला है वो एट द सेम टाइम मैंने एक्सट्रूड किया बेस के साथ. अगर कोई बंदा बोलेगा मुझे ये स्लॉट बाद में निकालना है, सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. ओके, तो फॉर दैट पर्पस वो भी मेथड कैसे है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको. तो पूरे स्केच को मुझे डिलीट करना पड़ेगा पहले उसके लिए. और ओके, चलो अभी स्केच वो स्लॉट तो गायब हो गया पूरा. नाउ पहले मैंने बेस निकाला, अभी मुझे याद है यार इस पे स्लॉट बनाना रहेगा. सो नाउ आई कैन डू स्लॉट ऑल्सो. सो कौन से प्लेन पे बनाना है, स्केच कमांड सेलेक्ट करो और प्लेन को सिलेक्ट करो. ये प्लेन पे बनाना है, से स्केच. नाउ यू कैन स्टार्ट विथ योर that slot feature which you have forget to draw at that time you draw the base. ये भूल गए आप निकालने के लिए, अभी आपको याद आ गया. सो यू कैन डू इट, नॉट लाइक कि आप फिर से जीरो से स्टार्ट करना है. सो यू कैन स्टार्ट टू ड्रॉ ऑन दैट प्लेन. बिफोर ड्रॉइंग दिस न्यू फीचर ऑन द प्री एक्सट्रूडेड feature, you have to take a reference line, that is most important. Okay, so reference line लेना है, reference line ले लो फिर से. it is better. अब हम क्या करते हैं, फीचर हमको पता है इस सेंटर से वो स्टार्ट हो रहा है. दूसरा सर्कल भी R1 इतना है, क्या है उसका डायमेंशन 100 लिया था शायद से, नहीं बहुत ज़्यादा हो गया 100. आई थिंक 25 है कुछ तो. 25 बहुत होता है, कितना होगा 50. ओके 50. And distance between them 143, but I will take say 80. the plate is बहुत पास हो गया. Okay, 100. Now draw the tangent to both circle together. Okay,
वायर फ्रेम में भी व्यू दे सकते हैं, सॉलिड व्यू। अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है सॉलिड व्यू, तो उसको जो प्री एक्सट्रूडेड व्यू फीचर है उसको यू कैन कन्वर्ट इनटू वायर फ्रेम। ओके, सो जो भी व्यू है वो क्लियर दिख जाए। Okay. So now delete segment. This extended lines we have to delete it. Okay. ये आपने फीचर निकाला है, दिस फीचर यू हैव ड्रॉन। ओके, अगेन री-एंटरिंग इनटू द स्केचर मॉड्यूल। ओके, आप फिर यू हैव टू एंटर इनटू द स्केचर मॉड्यूल अगेन बिकॉज यू हैव फॉरगॉट टू ड्रॉ दैट थिंग, दैट फीचर ऑन योर बेस फीचर। ओके, ऑन योर बेस फीचर आपने वो भूल गए और निकालने के लिए। नाउ वी विल exit from the sketch mode. Now this is a new drawn sketch on your extruded feature. Okay, वो आपके surface पे दिस आप देख सकते हो कि when I am looking from side view it is drawn on this plane, not on the bottom plane. Okay, जब अगर ये पीछे से देखते हो तो you will able to see. Okay, but it is already when you look from the side view it is you come to know that the plane ये जो feature है it is drawn on the upper plane only. Okay, now again you have to select extrude for that also, but we don't want to extrude it as a solid. We want to extrude it as a hollow, or you can say you have to cut it. You want to cut it. Okay, so just reverse it the direction of it. ओके, नीचे कट करना, ऊपर तो मटेरियल ही नहीं है। ओके, एंड जस्ट से रिमूव मटेरियल एंड क्लिक ऑन ओके। इज इट? बट इफ यू ऑब्जर्व द one more step is increased, two sketch you can able to see in the previous that attempt in which I have drawn base with this feature. That time only single sketch and single extrude was there, but right now I have two sketch and two extrude, so my two steps was less in the previous case, but here two steps is more as compared to the previous, so दो steps बढ़ गए मेरे unnecessary। ओके, तो दो स्टेप बढ़ गया तो क्या हुआ, मेरा टाइम इतना वेस्ट हो गया। सो ये ऑब्जेक्ट को सिंपल है, सो इसके लिए इतना टाइम नहीं गया। बट इफ यू हैव टू ड्रॉ अ साइलेंसर्स, इफ यू हैव टू ड्रॉ अ इंजन मॉडल, द नंबर ऑफ parts are there, and to redraw or to make a more steps for a simple thing, it will take a quite more time to complete that entire thing। okay, so जितना steps आप कम कर सकेंगे, in that way you have to think। so ये हो गया हमारा फीचर। नाउ हम फिर से हमारे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, एग्जांपल को देखते हैं कि अभी हम क्या फीचर निकालना है। ये फीचर निकालना है और ये फीचर, ये दोनों फीचर हमें निकालना है। ओके, सो विल ड्रॉ दिस टू फीचर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है वो देखते हैं पहले कि वो फीचर हमें ड्रॉ करना है। तो वो प्लेन कौन सा है, वो ये प्लेन है। तो आप कहाँ ड्रॉ करोगे, इस प्लेन पे। ऑब्जेक्ट अभी नंबर ऑफ प्लेन है, जो प्लेन है वो सेंटर से पास हुए हैं। ओके, फ्रंट प्लेन, राइट प्लेन एंड द टॉप प्लेन वो पास हुए हैं सेंटर से। बट हमें क्या कहाँ प्लॉट करना है, हमें इस ऑब्जेक्ट के इस प्लेन पे ड्रॉ करना है। ये जो फेस है, ये फेस, ओके, ये अभी रेड कलर में हो गया, इस प्लेन पे हमें ड्रॉ करना है। ओके, सो यू कैन डायरेक्टली सिलेक्ट दिस प्लेन। अगर आपको ऑब्जेक्ट के इस प्लेन और जो सेंटर में जा रहा है फ्रंट प्लेन, इन दो प्लेन के बीच में किसी एक प्लेन पे निकालना हो तो आपको डायनेटम प्लेन लेना पड़ता है, दिस प्लेन, और आपको बोलना पड़ता है कि वो प्लेन सेंटर से कहाँ है, और वो प्लेन क्रिएट करना पड़ता है ऑब्जेक्ट में। बट अभी वैसा सीन नहीं है, हमको प्लेन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली ड्रॉ करना है, तो इस प्लेन पे ड्रॉ करना है जो ऑब्जेक्ट का, सॉरी ये वाला प्लेन। ओके, ये जो रेड हाईलाइट हुआ है उसके ऊपर हमें ड्रॉ करना है। इज इट? देखिए ऑब्जेक्ट, देखिए उसी प्लेन पे ड्रॉ करना है और उसको फिर इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर सकेंगे हम। ओके, सो हम ड्रॉ करते हैं और पहले डायमेंशन डिसाइड कर लेते हैं। ये जो सर्कल है इसका डायमेंशन समझो, इसका हमने लिया था 200, सो इसका भी 200 लेते हैं हम। ओके, और बाद में ये जो सेंटर का सर्कल है उसका डायमेंशन बाद में डिसाइड करते हैं। तो ये इसका जो विड्थ है इस फ्लेंज का 200 हम डिसाइड करते हैं, और इसका
हाइट हम डिसाइड करते अगेन 200, ओके। ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 200 है और इसका सर्कल का डायमीटर भी 200 है। सो लेट draw this feature on it, okay। So before drawing this feature we have to select a plane on which we have to start a drawing, okay। So go to the sketch mode, click on sketch। अभी देखिए इसने डायरेक्टली सिलेक्ट कर दिया, मैं कैंसिल करता हूँ फिर से टू अंडरस्टैंड इट। एक तो पहले आप प्लेन सिलेक्ट कर सकते हैं, ये प्लेन सिलेक्ट करके आप स्केच बोल सकते हैं तो डायरेक्टली वो प्लेन ओपन हो जाएगा, या स्केच बोलिए और उसके बाद प्लेन सिलेक्ट कीजिए। और इसमें बहुत डिफिकल्टी जाता है सिलेक्ट करने में, अगर प्लेन क्लियरली मल्टीपल प्लेन रहेंगे उस ऑब्जेक्ट में। सो बेटर वे, पहले प्लेन सिलेक्ट कीजिए। जब प्लेन सिलेक्ट हो गया, जो मुझे जिस प्लेन पे मुझे ड्रॉ करना है वो हाईलाइट हो गया रेड कलर से। नाउ क्लिक ऑन स्केच एंड से स्केच। नाउ जैसे मैंने बोला था, कभी भी आप प्री एक्सट्रूडेड ऑब्जेक्ट या फीचर पे फिर से स्केच कर रहे होंगे, दैट टाइम यू हैव टू सिलेक्ट अ रेफरेंस प्लेन, यू हैव टू सिलेक्ट अ reference line, okay। So I am again putting two reference line over here, it is very important। Now start to draw। Okay, so first of all we have to give that dimension 200, okay। now हमें पता है from this point to this center point the total distance is what, how much, 500। from this point to this edge of base is 500, so this width of this new feature is 200, okay। So this edge of this new feature from the center point should be of 300, okay। So it is important, so if this reference line, if I forgot to draw, then this new dimension will not appear, okay। So to draw a reference line is that much important, इसलिए ये important है। अगर ये reference line if I forgot to draw, then ये reference जो डिस्टेंस है जिससे ये मेरा न्यू फीचर और नीचे का बेस प्रॉपरली अलाइन होगा, वो एडवांटेज मुझे नहीं मिलता था। सो टू हैव दैट एडवांटेज, प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ प्री एक्सट्रूडेड फीचर एंड द न्यू स्केच और न्यू फीचर यू सपोज टू ड्रॉ, उसके लिए उसके अलाइनमेंट के लिए यू हैव टू पुट अ रेफरेंस प्लेन और रेफरेंस लाइन ऑन द sketcher model, okay। So because of that only it is able to realign with the pre-drawn extruded features। Now we will edit that dimension, vertical height, that is 200, it is also 200, okay। after that draw a circle, क्योंकि हमारा जो फीचर है हमने यहाँ तक कंप्लीट किया, वी हैव कंप्लीटेड टिल दिस एंड, ओके। यहाँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू this point 200, from this point to this point 200। now we have to draw this thing, entire arch, this half circle we have to draw, okay। again we will take a circle, center point हमें ये डिस्प्ले कंस्ट्रेंट बता देगा, डिस्प्ले कंस्ट्रेंट ऑन होने की वजह से वी हैव दैट नोटिफिकेशन whenever we are pointed on the midpoint, we have that notification, okay। complete it, just end। now just delete segment use करो and cut all the extra part। now this is our feature। again if you observe it, one more feature is left, that is center hole। again same way जैसे मैंने while drawing base I draw that slot in that, then it become easy to or which responsible to reduce my number of steps। so same way here also you can do, while drawing these planes you can also make a hole over here which will help you to reduce the steps, okay। so same way here also I draw a hole over here in a one sketch mode also only, okay। now give the dimension, it is I think right now 97.9, make it 100, okay। now this is my sketch now completed, one side
that one side view से मेरा sketch complete हो गया. Okay, now I can ready for extrusion. Okay, now I'm exit from now. uh, now it is okay, ये जो भी feature है it is everything is cover. अब मैं इस sketch model से बाहर निकल सकता हूँ. Now I can exit from it. Okay, so this is my view how it look before extrusion. Okay, when I'm selecting extrude command, okay, so it extruded beyond the base. Okay, ये okay हो गया. I have to redo, undo it, select this thing. Okay, पैनिक होने की जरूरत नहीं, वो सिलेक्ट हो गया था. इट डजंट मीन दैट वो फ्रीज हो गया. यू कैन अनडू इट. ओके, कंट्रोल जेड कंट्रोल आर, वही सॉरी कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई, दिस इज अ शॉर्टकी फॉर रीडू एंड अनडू. ओके, वो काम करता है इधर. सो अनदर वे यू हैव दिस टूल्स ओवर द टूल बॉक्स. ओके, ये कमांड है अनडू एंड रीडू का, वो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो. यहाँ आपको शॉर्टकीज दिखाएंगे कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई. ओके, now just select, now just sorry किधर गया हमारा कोई. okay, now just revert the direction of this extrusion. डायरेक्शन इसका रिवर्ट करना है, ये बटन से एक्सट्रूड होगा. अब इसका थिकनेस देना है, सो इसका थिकनेस बहुत मिनिमम देना पड़ेगा बिकॉज टोटल विड्थ इज 200. ओके, सो इसका जो एक्सट्रूजन है, इफ आई एम गिविंग 10, it's too short, I think. It's too less. Just give it say 25. Let's check कितना होता है. It is also less. 50. Yeah, it's sufficient. Okay, so this is the 50 width हमने दिया है. This is your width of the flange. Say okay. Okay. Now some people may go for another flange. Okay, because one flange is completed, another flange is still remaining. So some people may go to draw another flange same way which we have draw here. Okay, but which will again just like a donkey work, because you have already drawn of one flange. Okay, and you have to go for, you are going for the another flange which having a same feature as you have drawn previously. So it is just a donkey work because you have already did it and you are redoing it. So instead of redoing it, you can mirror this feature. Okay, so ये जो feature है, ये already जो next feature आपको draw करना है, ये flange उसकी तरह है ना. So why you are going to redraw this flange from this side again? Okay, no need to go for this side again. So ये feature already available है which is symmetric or which is similar. Okay, so you can go for the mirror now. So mirror करना है हमें, यही feature इस side में अपने आप appear हो जाएगा. Okay, तो वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेन को विजिबल करना पड़ेगा. मैंने प्लेन इनविजिबल कर दिया था. अभी आपका जो फ्रंट राइट एंड टॉप प्लेन अभी आपको दिख रहे होंगे. ओके, अब मुझे क्या फीचर मिरर करना है. सो ये वाला फीचर, ये जो मैंने एक्सट्रूड किया है ना, ये फीचर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो या यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो. सो बेटर टू सिलेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, गो टू हियर ओनली. ये जो आपका हिस्ट्री, आपने कैसे कैसे ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट किया टिल इस पॉइंट तक, उसका पूरा हिस्ट्री आता है इधर. ओके, इसको एडिट करना हो तो यहाँ से एडिट करते हो. व्हेनेवर यू वांट टू एडिट द डेफिनेशन, यू जस्ट राइट क्लिक ऑन इट एंड एडिट डेफिनेशन. ओके, तो कुछ भी ये जो सर्कल है सेंटर का, यू कैन एडिट द डायमेंशन ऑफ इट इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग दिस एंटायर थिंग. ओके, so now I have to mirror this feature exactly opposite to this plane. Which plane it is? It is a right plane. Okay, this is a right plane. About the right plane I have to mirror this image. Okay, so just select the feature, and here one thing supposed to appear. Just a minute, where is the mirror command? Yeah, this is a mirror command. Okay, so this is a mirror tool. So just select the feature this feature and click on the mirror and select the plane about which you have to mirror it. Just a minute.
Okay, so we have to mirror the that feature. Say on click on extrude, say mirror, select atom, भूल रहा है फिर से. Okay, so this is the mirror is created about the plane. फिर से करके दिखाते हैं. जस्ट अनडू इट. क्या मिरर करना है आपको? ये फीचर मिरर करना है. ओके, सो सिलेक्ट दैट फीचर. अभी आप देखोगे तो दिस मिरर टूल इज नॉट appear right now. Okay, it is disabled. As soon as you select any object, any feature, okay, then and then only that that mirror tool get appear. Otherwise it disable. अभी देखो disable हो गया. Whenever it some feature is selected, that time only the mirror feature get appear. Okay, after that you just click on mirror. पहले मिरर क्लिक नहीं होगा जब तक whenever you are not or till you are not selected any feature which you have to mirror. Till that point this tool will not be able to perform any task. So first of all you have to select a feature. Okay, after that it's supposed to appear and you can use it now. Okay, so say mirror. After you will ask you select a plane to mirror about. So ये plane है जिसके about मुझे mirror करना है. So I have selected that plane. Now जो feature मुझे mirror करना था वो orange color में हो गया and just click on OK button. Okay, so this is the mirror image which I have created. So ये फिर से जो वर्क था रीडू था रीवर्क था to draw this set plane वो मेरा बच गया and just because of the mirror command. Okay, so this is the thing which we have completed in today's lecture. Okay, if you feel difficulty to understand this thing, please ask me in our comment section. कुछ डिफिकल्टी है आपको पूछिए कमेंट सेक्शन में या इट इज ओके. If it is okay, this say okay in comment box. So we will leave. We will come. We will conclude the today's session. Okay. So I think you have understood the all thing which we have covered today's lecture. Okay. So अभी आपसे एक क्वेश्चन है मुझे. How many of you have tried this thing? Okay, how many of you tried